Let us remember the Almighty, our Guru. Let's seek the divine blessings. Om Bhurbhuvah Swaha. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yunah Prachodayat. Dhiyo Yonah Prachodayat. Guru Brahma Guru Vishnu Gurur Brahma Gurur Vishnu Guru Devo Maheshwara Gurur Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Gurur Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Tasmai Shri Guruve Namaha. Go down to the Almighty to honor Gurus and seek the divine blessings. So, I want to know certain things from you that if you can open your mail and if you can tell me that what were the links that I have sent you. Okay. So I will send that to, so I'll edit that list and I'll also add your husband's email ID to it. So he will also be receiving it. And I want you to, after doing that, want you to tell me that which ones we have not sent you. Okay. Because I think there would not be more. I think 2 or 3 would be there, which You have sent me till 22nd June. Learning to apply mindfulness in everyday life, 7 elements of enlightenment. that is the last thing that I've shared with you. Yes, yes. We started on 10th. Yes. So you just quickly go through the list that you have received. Yes, yes. Just a moment. Sharing. Okay. So on 11th June, you have shared what is mindfulness. We started on 10th or we started on 11th? We started on 10th. We started on 10th. 10th. I remember. Friday. It was, yeah, it was a Friday. I It was a remember. Friday and I remember it was 10th. 8 minutes. Let me just see. Yes, it was 10th of June. So, Yeah, yeah, it's 10th of June, but might be possible that you have shared the video on 11th. so then on 11th, I would have shared you. No. I have shared you on 11th. Right. Yeah. Right. So what is mindfulness? Right. Yes, yes. I remember us talking in the evening on 11th, and Yeah. then I sent you. So it Yes, would be yes. somewhere around 6:37, 6:40-ish. Correct.
Yeah. Yeah. Okay. Then Yeah. on 14th, no, 13th. 13th. Yeah. 7 characteristics of mindfulness healer. Okay. Then on 14th June, history of mindfulness. Okay. 15th, mindfulness of breathing and neuroscience of mindfulness. Okay. Then on 16th, psychology and neuroscience of mindfulness. Okay. June 18th, Buddhist purposes of mindfulness meditation through psychological lens. Mm-hmm. 20th June, understanding of evolutionary psychology. 22nd June, learning to apply mindfulness in everyday life. 9th. So from Then 20th. on 7th July, you have shared body scan. वो जो हस्बैंड वाले आईडी पे आपने भेजा था हाँ. वो माइंड बॉडी स्कैन था. Hmm. Hmm. So then from 20th, I had to travel to Ahmedabad. हम्म. So 21st. So ये सब मैंने आपको already भेज दिए हैं, but you don't have the access to it. What you Yeah. have access to is body scanning, Yes. right? Rather than उसके अलावा आपके पास किसी का भी एक्सेस नहीं है. Right. बॉडी स्कैनिंग के अलावा मेरे को आपको सब कुछ देखने का है, इसमें सिर्फ एडिट करने का है और बाकी जितना भी है वो मुझे आपको सेंड करना है. बॉडी स्कैनिंग बोलते हैं. हम्म. So, acceptance of thoughts, feelings and emotions, वो वाला एमबीआई. I need to check. वो वाला नहीं, एमबीआई. no, वो नहीं था. हाँ, that I have to send you. Yes. Yes. Learning to apply mindfulness in everyday life, वो हो गया है. Mindful eating and social anxiety. Then this is done, right? Mindfulness of breathing and neuroscience. Yes. Then mindfulness of sounds. Then it is nervous system. शायद हमने nervous system यहाँ देखिए. अच्छा, psychology and neuroscience of mindfulness हो गया. Okay, then Yes. brain.
then it is respiratory system, and nature of mindfulness teacher. ठीक है, वो सब हमने ये 2021 में किया है. Then stop. Then it is understanding of evolutionary psychology हो गया. हाँ. What is mindfulness हो गया है. 7 characteristics हो गया. So in total I have to send you 15 of them again. Yes. 15 में से 8 मुझे रीसेंड करना है और 1 2 3 4 5 6 7 मुझे सेंड करने हैं. डन. तो ये सब कुछ कवर हो जाता ना. अभी ऐसा सब प्रॉब्लम हो गया ना, तो आप एक बार मैं सेंड करूँ ना, उसके बाद आप एक बार सब कुछ देख लेना कि हमारा सब कुछ हमने कवर कर लिया है. ठीक है. अब आपको मिल चुका है. ठीक है, तो देन कुछ होगा तो कर लेंगे. क्योंकि ऐसा ऐसा हो गया ना, कंफ्यूजन. बट इट्स सॉर्टेड आई गेस. ये हो जाएगा, फिर यू जस्ट चेक इट, तो देन यू विल कम टू नो अबाउट इट. चलिए, कोई बात नहीं. व्हाई इज इट हैपनिंग? मैंने हस्बैंड के मेल से अपने मेल पे सेंड किया है, बट इट इज शोइंग स्पैम, और उस मेरे मेल में फिर भी ओपन नहीं हो रहा है. नहीं होगा, क्योंकि हमने एक्सेस सिर्फ उनको दिया है. तो अब क्या करूं? मतलब आई हैव टू एक्सेस इट थ्रू हिज आईडी ओनली, और अदरवाइज इज देयर एनी अदर ऑप्शन? आप एक काम करें, क्यों नहीं करते, हाँ. आप एक दूसरा ईमेल आईडी बना दो. हाँ, दैट वुड बी बेटर. मतलब एवरी टाइम आई हैव टू ओपन एज एन, वो थोड़ा मेरे लिए अनकंफर्टेबल होगा. That would be better. मैं after this class I'll send you the new one. सब कुछ सारा ईमेल In वही. that you just send me everything. Shivani. सेशन लेवल 2 3 के लिए भी वही ईमेल आईडी देना, तो ठीक सारा है. माइंडफुलनेस उसमें ही हो जाएगा, एक ही ईमेल आईडी. ठीक है. Done. हाँ, that is better. उसपे भी just try sending me one. मैं उसको open करके check कर लूंगी, अगर उस पे workout कर रहा है तो. हाँ, ट्रायल वाला हम प्रोसेस करेंगे ही. एक बार मैं सेंड करूंगी, आपको एक्सेस मिलता है, फिर ही हम सारे सेंड करेंगे. चलिए. मेरे को ना क्या लगता है कि आप जब ईमेल आईडी बनाओ ना, तब वहीं पे कुछ आप नॉर्मली जैसे बनाते हो ना, वैसे ही बनाना. कुछ स्पेशल उसको ये मत देना, क्योंकि देखो आपके हस्बैंड की ईमेल आईडी में इट वाज ओपनिंग, सर के ईमेल आईडी में जो मैं डालती हूँ उसमें ओपन होता है, मेरे में ओपन होता है. अलका जी के वीडियोस जो मैंने उनको भेजे थे वो भी ओपन होते. ठीक है, तो आप उसका सेटिंग ऐसा नॉर्मल वाला ही रखना कि आपको एक्सेस हो सके सारे वीडियो. ठीक है. सब देखना. मेरे को भी नहीं पता कैसे क्यों हो रहा है, शायद आपने किसी नहीं भी किया हो, पर वो मेल में कुछ दिक्कत है. ठीक है, मैं एक बार रेक्टिफाई भी कर लूंगी उसको. बात नहीं, देखते हैं. चलो, क्योंकि अब वो लिंक भी किसी और को शेयर करेंगे ना, वो ओपन नहीं होगा. दिस वीडियो इज प्राइवेट ऐसा ही दिखाएगा, क्योंकि वो हम प्राइवेटली शेयर करते हैं, तो जो हमने ईमेल आईडीज डाले हुए होते हैं वो ही एक्सेस कर पाते हैं. ठीक है. है ना. ठीक है. लेट अस स्टार्ट विद टुडेस थिंग.
आज हम थोड़ा पढ़ लेते हैं. ठीक है. Okay. क्योंकि अभी हमारा सिर्फ 2 ही एमबीए बाकी है. One is lake meditation and another one is mountain meditation, जो आप पहले experience कर चुके हैं, but you will get one more chance to experience it. Okay, अभी हम पढ़ेंगे professional development, ठीक है. which is the last point of the course. प्रोफेशनल डेवलपमेंट. Category 6. Category 6 in your syllabus. वॉइस ना थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है. Category 6 in your syllabus. ओके 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 ओके. आपके पास वो सिलेबस है ना, उससे टैली कर लेना सारा चीजें, सब कुछ. इससे सिलेबस है. वॉइस ना बीच बीच में थोड़ा मिसिंग हो रहा है. There is a syllabus on the website. या. हाँ, तो उससे एक बार टैली कर लेना कि हमने सब कुछ कवर कर लिया है, एंड आल्सो साइमल्टेनियसली टैली द वीडियोस कि आपके पास आ गए हैं कि नहीं. एक सेकंड. कनेक्ट द चार्जर. चलिए. So the point that we are going to cover first is ethical commitment. And the topic is just pardon. Professional development. Ethical commitments. Okay. Just a second. I'm just
Anyways, I'll show it to you afterwards. अभी वेबसाइट पे एक्सेस नहीं है. अद्वैत की वेबसाइट पे करिकुलम एक्सेस नहीं हो पा रहा है. अच्छा, शो द करिकुलम करके आता था पहले, अभी नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों. आई थिंक एक मिनट चेक कर लेती हूँ. कैन यू सी द करिकुलम? मिनट में बस. क्या चेक करना है इसमें? करिकुलम लेवल 1 का. ओके, यार देखो दिख नहीं रहा था पर है. हाँ है इस पे. Okay, so first is mindfulness teacher credentials. मेरे को वही देखना था कि ये कुछ और है पहले. माइंडफुलनेस कोर्स करिकुलम कोर्स सिलेबस लेवल 1. सबसे पहले mindfulness teacher credentials. So mindfulness teacher credentials, may I have to explain you certain things that from where you are studying. Okay. So this has the accreditation from the World Yoga Alliance. Correct. So you can, the syllabus is internationally accepted. Internationally, you can internationally practice it. You are qualified to practice, you are qualified to train internationally. जितने भी schools है, जितने भी institutions है, वो चाहे private हो, individualized हो या चाहे वो government के साथ बनाए गए हो, all of them in all over the world, ठीक है, वो यही curriculum follow करते हैं, not necessarily in the same order, but inclusion सारा सब यही होता है. ठीक है. So that is how it makes you certified internationally accredited mindfulness healer or a trainer or a practitioner. ठीक है. So you anywhere in the world, all right, you can practice mindfulness, you can teach. Okay, you can open your own institution. Correct. So all of these things are possible. Correct. Level 1 is just the beginners level. Then we have level 2, which is intermediate, and level 3, which is advanced. Right. In order for you to become like a proper ethical mindfulness practitioner, you need to take forward, and you need to learn all the 3 levels. Right. But the plus point is that even when you are done with the first level, the course is so wide, vast. It is inclusive of all the things which are necessary basic for a basic training, and that is why it is a certified mindfulness teacher training course. That is what we say. Correct. So you can practice it, start like right away after the first level. You can train people for the first level. You can train people with the basics, with the foundations, okay, of what is mindfulness. You know already 10 MBIs, which you can practice, give the therapy. Correct. So all of these is possible after the first level itself, right?
but it is always important that we complete all the 3 levels in order to become like proper, because Yeah. rather than thinking from this perspective that we are able to practice it just after the first level, okay, we should not stop there, because it's something which is uh, more spiritually inclined, which will tell you about your spiritual journey. So for our spiritual growth and development, and to reach that stage, okay, where we are not just learning mindfulness or practicing mindfulness for the sake of xyz perspective or for reason, but actually we should understand ourselves. Okay, it should be first beneficial to ourselves, it should first solve the purpose, or should be that much purposeful for our own self, rather than we making purpose in other person's life. Okay, हम practice करवा रहे हैं लोगों को, but we have like very basic level of mindfulness. Okay, we have only not find out ourselves, correct, our true self, our focal self. So that is not actually ethically correct, right? So if we have jumped into something, we should always complete it, right? So this is how it is, correct? So that is it for mindfulness teacher credentials. You have all the credentials that is required to practice mindfulness. Okay, anywhere in the world, you will be having a proper number. Okay, with that what do you call it, sort of a license number जैसा होता है सबका, वैसे आपको एक नंबर मिलेगा, ठीक है, on your certificate. There will be certificate will be made properly, एकदम आपने क्या क्या उसमें पढ़ा है वो सब इंक्लूड होगा, उसमें नाम इंक्लूड होगा, डेट इंक्लूड होगा, उसमें ये भी इंक्लूडेड होगा कि आप कहीं पे भी वर्ल्ड में उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपका फोटो होगा, सो एवरीथिंग वुड बी देयर आपके सर्टिफिकेट में. Okay, so certificate has to be framed and kept. ठीक है, मेरा मैं सर्टिफिकेट दिखाऊंगी आपको once we are done with it. Okay, so that is important. Now ethical commitment, that is the second part. Yeah. So when it comes to ethical commitment, I have always been telling you this since the very start, that we need to be very true to ourselves, okay, authentic when we are practicing mindfulness, because mindfulness is something that became science, all right, as John Kabat-Zinn actually put it into, add up science and backed up with science. But initially it is something which is जैसे हम बोलते हैं, if you have heard about this term good है, in the sense is something which is very personal, very spiritually, you should not tell. So say for example, it comes into the series of skills, सिद्धि जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, हम सिद्ध किए हुए हैं, तो हम सिद्ध किए जाने वाले ऐसे प्रैक्टिशनर्स हैं कि जो हम हील कर सकते हैं लोगों को, ठीक है. हम किसी को भी देख के, हम किसी को भी वो अगर हमारे पास आया है हमारे दरवाजे पे, सो we have something from the universe that we are getting that can help the other person to heal, ठीक है. So this is something which is very good. Okay, सबके नसीब में ये बात नहीं होती if I talk very spiritually. All right, so universe have picked people, right? So it is something which is very ऐसा पर्सनल प्राइवेट ऐसा है कि हम सबको बताते भी नहीं है कि we are mindfulness healers, we are mindfulness practitioners ऐसा. So it is something which is very integrated and internal, that we do not actually tell this to people, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम हमारी जो एनर्जी है वो देते हैं, correct? Always also understand when I'll be talking with you in the third point of sub point of professional development, that never give mindfulness therapy or energy without money. Even if you take 1 rupee, 5 rupee, okay, take it, because it's an energy exchange going on, ठीक है. हम हमारी एनर्जी देते हैं,
even if you are doing any webinar, seminar, talk, okay, anything like that, be it very minimal, ठीक है, जैसे 50 rupees, 100 rupees, if you are having a webinar or seminar or a talk, something, anything. And what is the standard, standard thing which we ask in exchange? You can anywhere start from 15,000 if you are talking for 1.5 hours, because it is Matlab, just, if it's a webinar, or it's a if I'm addressing group of people, but if we talk in person, like if I'm taking personal things, so what it would be? so if you're giving a therapy, and if you are not just talking, but if you're going to give the therapy, Yeah, you can start from 1,500 to 2,000 per session. per session. Okay. Okay, ये रेट्स अहमदाबाद में चलते, तो इन दिल्ली Okay. हाँ it can be higher. So when I was going to have my first webinar, and I asked sir that how much I should ask for, okay, कि क्या होना चाहिए, क्योंकि वो मेरे को हर एक चीज में गाइड करते हैं, ask for his guidance everywhere after Okay. he being my guru. So he said that you can charge because your accreditation is such, okay, it's international accreditation, nobody gets it. It is not about others, or it is not about the international accreditation, but you have learned that much, and it is about your knowledge. Yeah. You have a vast understanding about all the basics of what is mindfulness. 10 MBIs, which nobody actually know, a lay person. ठीक है, तो जितना वो जानते हैं माइंडफुलनेस के बारे में, उतना आप बहुत ही ऐसा कंप्लीट क्लोजर में उनसे बहुत ज्यादा जानते हैं. So you have a lot of things to give, right? And so you should charge. So मेरा talk, सबसे पहला talk, it was also a webinar, तो मेरा सबसे पहला talk we planned for 1.5 hours. ठीक है, हमारा टाइमिंग ऑर्गेनाइजर ने बोला कि मैम वी कैन डू इट फॉर 1.5 hours. हमने बोला ठीक है, 1.5 hours में I have to talk about everything right from the start till the end. Okay, it was, and we were doing a series of it. So series in the sense कि पहले मैं सिर्फ theory part बताऊंगी कि what is mindfulness in 1.5 hours, and then on the next weekend we were taking the practical of it, कि जो जहाँ मैं MBIs करवाऊंगी उससे. And it was group of people, like huge group of people, and at that particular point in time, when it was planned for 1.5 hours, it was a webinar. It went till 3 hours straight. Okay. Okay, because I had a lot of things to say. Correct. And people were interested. मेरे जितने भी सब मतलब participants थे, वो पहली मिनट से जितने थे उतनी लास्ट मिनट तक उतने थे. Nobody left. ठीक है. So that was the entire thing. And फिर मुझे उस टाइम पे realization हुआ कि सर क्यों बोलते हैं कि तुमको इतना चार्ज करना चाहिए. So, and then after I was doing my practical thing, like next weekend, again it went for 3.5 hours. And वो तो face to face था. So your going time, your energy, your time, you being there, आपका knowledge, ये सब पे पैसे लगते हैं ना. So all of these things have to be taken care of. But ये सारी चीज तब आएगी जब आप पूरा ही जो कोर्स है उसको ऐसे घोल के पी जाओगे. ठीक है, रीड करो, ये जितनी भी बुक्स है ना उसको रीड करो, आपको इतना सारा माइंडफुलनेस के बारे में पता चलेगा. और ऑलवेज थॉट खींचना, हाँ, क्योंकि जो माइंडफुलनेस बताया ना, मिरेकल्स ऑफ माइंडफुलनेस में, वो ऐसी चीजें जो बहुत ही मामूली है, बट किसी को शायद ध्यान भी ना आए. उन्होंने ऐसी चीजें डिस्कवर की है. ठीक है, सो खींचना हाँ को पढ़ो, वो मतलब बहुत ही ज्यादा कुछ अलग लेवल पे उनका माइंडफुलनेस. दैट इज व्हाई इज कंसीडर्ड द फादर. तो ये है. I started with the catastrophe living. कैटेस्ट्रॉफी भी सही है, वो भी मजा आएगा, बट वो
miracle of mindfulness क्या है? It's like a day to day journey you are paving with तिचना, ऐसा है. अगर तुम मतलब if you get engrossed in it ना, so every day you know you will go travel with him everywhere where he is traveling. So it is like that. बहुत ज्यादा मजा आता है वो पढ़ने में. So I first I read it like कि मेरे को, क्योंकि it is a curriculum book, ठीक है, so I had to read it, so I read it. But then I was so interested, तो मैं तो उसके साथ ऐसे से चल रही थी. फिर मेरे को ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि अच्छा ये करिकुलम बुक है, यू हैव टू रीड इट फास्ट ताकि यू कैन राइट इन योर जर्नल. बट वो करने के बाद मैंने फिर से किताब शुरू की फ्रॉम द स्टार्ट टू रीड इट. So that's how I read it like 3-4 times till now, and I do not get bored after reading it. मेरे को अभी भी ऐसा होता है कि हाँ चलो खोल के बैठो. So ऐसा है, उन्होंने जो चीजें बोली है वो बहुत ही ज्यादा ऐसा मतलब बहुत मजेदार है, मजा आएगा. Okay, so coming back to ethical commitment, so always, yeah, we were on energy exchange, that you always ask for money. You do not give any of your knowledge free of cost. You should not. और ये मुझे मेरे गुरु ने बताया है, so it is my responsibility to pass the legacy. So never, you know, give your energy just like that. You ask even for the minutest of the amount, doesn't matter. क्योंकि मेरा ऐसा था कि mindfulness happened to me, Advaita happened to me as if it was a compulsion that I had to do. But before that, I had already interest in mindfulness a lot. I was reading about it. ठीक है, ये अद्वैत हुआ तो वो मेरा कंपल्जन हो गया कि मुझे सीखना, इसलिए I had to, you know, ये करना. So पहले उसके भी पहले मैं वेबिनार, सेमिनार्स, टॉक्स करती थी अहमदाबाद में, बट इट वाज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट. और फिर सर ने बोला कि नो, आफ्टर यू हैव लर्नड इट यू शुड नॉट डू इट. और तो उसके लिए मतलब उनका रीजन है, उन्होंने मेरे को रीजन नहीं बताया. और इतना गुस्ताखी भी हम नहीं कर सकते कि हम उनसे पूछे कि सर क्यों ऐसा. तो उन्होंने जो बोला वो मतलब ऐसा कुछ समझ जाने का कि इसके पीछे कुछ है, तो उन्होंने बोला होगा. ठीक है, चलो. तो एथिकल कमिटमेंट में 5 एथिक्स है, ठीक है, जिनको आपको फॉलो करना है. और every teacher should practice all of these 5 ethics in everyday life, in their day-to-day life, and they should also ask their students and their disciples to, you know, adhere to the same thing. Correct? So first is ahimsa, non-violence. Okay. So this non-violence has to be in your thoughts, in your words, in your actions. That is in your deeds. At all the 3 levels, at all the 3 planes, you have to be, you know, ahimsa, practicing ahimsa, right? So हम सबसे ज्यादा पाप कौन से उसे करते? मन से करते. किसी के बारे में मुझे खराब ख्याल आ जाएगा, किसी के बारे में मन में कुछ बोल देंगे, है ना, ईर्ष्या हो जाएगी, तो वो सबसे ज्यादा जल्दी होने वाला पाप है. करेक्ट? तो वहां पे हमको बहुत ज्यादा संभलना है. वी हैव टू बी माइंडफुल देयर दैट हम किसी के बारे में गलत सोचे नहीं, है ना, बोले नहीं, और कुछ गलत करे नहीं किसी के लिए, किसी का बुरा ना करे. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू प्रैक्टिस. ओके, देन सेकंड इज सत्य, ट्रूथफुलनेस. Okay, so we should be truthful. Okay, at our with our practice that we are doing. Okay, we need to be true with what we are doing. Correct, हमारा जो mindfulness का practice है, because that is very pious, very holy practice that we are doing, right? So you should always be truthful towards it. You should be always truthful towards yourself, towards your clients, towards your students, right? And as a moral responsibility, as a social responsibility, you should also be very much truthful to the society. You should be always, you know, you should always try to do things
that you know as a mindfulness healer for the society that can benefit the society in general, right? तो ये चीजें हैं, correct. We should always be non-compromising. You should never compromise. Okay. So say for example, even if you know you have a client कि जिनका आपको लगता है कि ये नहीं होगा, या तो ये उनके किसी एक एस्पेक्ट को लेके that aspect should not influence your therapy or your way of giving them the therapy. ठीक है, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स जब आप फील्ड में उतरेंगे तब आपको समझ आएगा एक्चुअली कि क्या क्या चीजें अफेक्ट करती है. हेलो. Yeah, now it's okay. Yeah. So you will be able to understand and realize this thing when you will actually go into the field, when you will actually have students, clients. कि उनकी कोई भी चीज, कोई भी एक एस्पेक्ट, कोई भी एस्पेक्ट आपका उनके तरफ से जो भी है आपके लिए या किसी के लिए, that should not ever affect your manner or your way of giving the therapy. ठीक है, कि अडियर नहीं कर रहे, इनको विश्वास नहीं है माइंडफुलनेस में, तो फिर मैं माइंडफुलनेस थेरेपी क्यों दूं? Why should I put in so much of efforts in giving them the therapy? बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी छोटी छोटी जिससे आप ऐसा हो जाओगे कि यार ये क्या है, ये इंसान समझता नहीं है, इसको पता नहीं चलता. Never do that. Be very calm, very gentle, and always understand this one thing. If it is bound to happen at that particular point in time, it has to unfold, it will unfold. Okay? अगर वो नहीं हुआ है तो simply accept it. Don't create a hustle in your mind कि क्यों नहीं हुआ, ये ऐसा क्यों है, इसको क्यों समझ नहीं आता, या तो क्यों एडियर नहीं कर रहा है. वो उसका है पार्ट देखने का, वो हमारा पार्ट नहीं. बी वेरी वेरी काम, क्योंकि आप काम रहोगे तो आपका थेरेपी आप ऑथेंटिक बना पाओगे. दिस टम्बलर हैज टू बी कंप्लीटली एम्प्टी. ये रूल है, आप लिख लो जहां पे भी आपको लिखना है कि आप कभी भी फील्ड में उतरोगे, this has to be empty completely. There should be no bias, no prejudice, nothing at any level. ठीक है. There should also be no forget about compromises, but not even that thought कि ये ऐसा क्यों है. Okay, don't even ask, क्योंकि उसको हम गुजराती में ऐसा बोलते हैं या तो हिंदी में ऐसा बोलते हैं कि हम तर्क कर रहे. ठीक है, ये सारी चीजों में तर्क नहीं करना होता, उसको सिर्फ एक्सेप्ट करना. देयर इज नो लॉजिक, जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट. और उसमें मजा है, आपकी इनर इंटीग्रिटी, आपका पीस भी मेंटेन रहेगा और आपका मन बहुत ही हल्का रहेगा. यू विल नॉट हैव एनी ग्रजेस or any discomfort within yourself, and this is important when you are practicing such a stream. ओके, इतना होली प्रैक्टिस जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये सारी चीजें आना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, सो प्रैक्टिस ऑन एवरीडे बेसिस ऑल ऑफ दीज थिंग्स, करेक्ट, तो ही आप उसको ओवरऑल उसको स्ट्रेंथन कर पाएंगे. लाइक एट द एंड ऑफ कि आप जब ऐसा होगा when you have to look back in life, तब आपको ये सारी चीजें आपने तब स्ट्रेंथन की होगी, तो आपको अच्छे से you will be able to get your life sorted. Okay, then it is asatya. ASTEYA, that is non-stealing. ASTEYA. Okay. Non-striving, that means do not strive for anything. You said striving. Striving. Okay. Yeah. Done.
So do not depend upon your be at a stage कि जहाँ पे you are able to see beyond your realizations. Correct? So अगर आपको कुछ ऐसा रियलाइजेशन हुआ है, ठीक है, कि ऐसा है, होगा या ऐसा होना चाहिए, ट्राई टू लुक बियॉन्ड इट, क्यों, ठीक है, उसके आगे क्या, व्हाट इज अहेड ऑफ इट. सो हैव अ ब्रॉडर पिक्चर, ठीक है. जितना आपका अटेंशन का स्पेक्ट्रम ज्यादा है, उतना आप ज्यादा माइंडफुल हो पाएंगे, ठीक है. So try to increase your attention spectrum. ठीक है. This is very important. Why? Because आपको उतना दूरंदेशी होना चाहिए. This दूरंदेशी and being futuristic are two different things. Okay? Alright? आपको उतना समझ आना चाहिए कि इसके ये क्या क्या चीजों में अनफोल्ड हो सकता है. Then only you are able to be mindful at what you are doing in the present. आपने बिना सोचे समझे कुछ भी कर दिया and then you are ended up कि ऐसा हो गया. You should have given it a thought, no? आप तब mindful नहीं हो. That means कि आपने तब नहीं सोचा. Right? Yeah. So this is what is important. Correct? Then it is brahmacharya. That is chastity, purity, celibacy. Define. Brahmacharya, that is Purity, chastity, celibacy. So this is an Indian concept, pure Indian concept. ठीक है. So अभी तो ब्रह्मचार्य होने का स्कोप है नहीं. yeah. तो ब्रह्मचार्य कैसे हो सकते हैं? मन से. ब्रह्मचार्य किससे हो सकते हैं? हमारे जो ये स्ट्राइविंग थॉट्स है, फीलिंग्स है, जो हम अटैच हो जाते हैं सबसे, सब कुछ ले लेते हैं मन पे, है ना, ये सबसे ब्रह्मचारी हो जाओ. एक प्योरिटी अंदर से जगाओ कि मेरे को किसी के लिए कोई रंज नहीं है, ठीक है. सब भगवान के बंदे हैं, है ना, सब अपनी अपनी कर लेंगे. मेरे नसीब में ये है, ये लिखा है तो वो होगा. And mindfulness teaches you to accept it. क्यों accept it? क्योंकि जो जिस टाइम पे जितना आपको सहन करना है, या तो जितना आपके मन आपके झोली में आया है, उतना ही देखो, वो इतना ही होगा. हम उसको थॉट दे के इतना बड़ा कर दो, और फिर रियलिटी गुम हो जाती है, क्योंकि रियलिटी में तो इतना ही है, बबल इतना बड़ा बन गया. ठीक है. तो जितना आप देखोगे उसके हिसाब से आपके पास उसके सारे सॉल्यूशंस भी आप ही के अंदर है. ठीक है. ये कहा जाता है कि जब समस्या आती है, समस्या एक गर्भवती स्त्री है. ठीक है. समस्या क्या है? एक प्रेग्नेंट वुमन जो अपने साथ क्या लेके क्या लेके आती है, क्या किसको जन्म देती है? वो सॉल्यूशन को. ठीक है. तो आप सिचुएशन को एनालाइज करो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा. देयर इज नो वे कि आपको कहीं और ढूंढने जाना पड़ेगा. ये देखना जरूरी है, परसेप्शन कहाँ से लाओगे, कब लाओगे? जब ये सब चीजों से ऊपर उठोगे, जो आपको माइंडफुलनेस सिखा रहा है. तो देखने में फिर राइट. सो उसको उस तरह से देखो, जो है अभी है, जैसा है, दिस इज इट, दिस इज योर रियलिटी. कैन यू डू एनीथिंग टू चेंज इट? नो.
but you can definitely change the way you can see it and you can live with it. वो आपके हाथ में जरूर है, तो हम क्यों ना वो करें, rather than we are in the race of changing things for ourselves. सब ऐसा बोलते हैं कि आपको अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं है. रॉन्ग. आपको अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो आपका कंट्रोल उस चीजों पे है जो हो रही है आपके साथ. तो आपको अपने आप को भी कंट्रोल नहीं करना है, आपको आपके पास कंट्रोल में वो भी नहीं है, फिर आप भगवान को पूछते रहते तो कहाँ से होगा. ये रियलिटी. सो यू व्हाट यू हैव इन हैंड, सी टू इट. तो क्या है. सो ब्रह्मचार्य हम इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड देन इट इज अपरिग्रह, नॉन अटैचमेंट, नॉन होल्डिंग. Do not hold to any of your thought, emotion, feeling. छोड़ दो सब. फिल्म के डायलॉग में हम बहुत बार ऐसे सुनते हैं, लोगों को बहुत बार ऐसा कहते हुए सुनते हैं, ये सब मोह माया है, पर ये सच में मोह माया है. वो सिर्फ हम मूड हिला के बोल देते हैं, थोड़ा रियलाइजेशन कर ले तो मजा आएगा. फिर सिंपल चीजें हैं. आपका जो कर्म है आप वो करो, आपका जो धर्म है आप वो करो. आपको इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है. आपकी आपका जो कर्म है उसके बाहर का कर्म आपको कोई देगा नहीं, और आप लोगे भी नहीं. आपका जो धर्म है उससे बाहर का आपको करने का समाधि बना कर दिया, एक्सेप्टेंस नहीं है. ये दो ही चीजें जिसको पकड़ के चलनी है लाइफ में, क्योंकि ये दो ही चीजें हैं जो आपको पहचान दिला सकती है अगर उसके साथ सही रहे तो. ऑनेस्ट है ना. चलो, द थर्ड थिंग इज माइंडफुलनेस प्रोफेशनलिज्म गाइडलाइंस. So you can teach anywhere. ओके, जहाँ पे कोर्सेज चलते हैं, जैसे हमारा स्कूल है. ठीक है, आप अगर इंटरेस्टेड हो पढ़ाने में तो आप मुझे बता सकते हो. ठीक है, तो हम कुछ ऐसा अरेंज करके थोड़े से थियरी सेशंस आपको दे सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं. ठीक है, आफ्टर सर्टिफिकेशन. ओके, तो पहली अपॉर्चुनिटी तो आपको यहीं पे मिल गई. ठीक है, कि आप यहीं पे पढ़ा सकते हो अद्वैत में. ठीक है, अद्वैत गिव्स यू एजुकेशन प्लस प्लेसमेंट. सो ये है. ठीक है, आप कहीं और किसी भी और जगह पे चाहे से क्लासेस चलते हैं तो आपको खुद का अपना क्लासेस शुरू करने हैं. ठीक है, आप वो सब करवा सकते हो. आप थेरेपी दे सकते हो लोगों को. ठीक है, विथ माइल्ड एंड मॉडरेट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स सच एज मेंटल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, एवरीडे प्रॉब्लम्स. ठीक है, और अगर ये सब नहीं भी करना है तो जस्ट फॉर द मेंटल हेल्थ benefit and the health benefit you can make them practice this. ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो. You can Also, can we certify someone once we are certified? No, for that you need to have your institution. Yeah, मतलब वही like we need to build certain, okay, we need to fulfill certain criterias. मतलब ऐसे randomly नहीं कि मैंने सीखा है तो मैं किसी को दे रही हूँ. I need to proper registration of it. Yes, yes. Yeah. Okay. Then you can have your own brand. That is what I'm talking about. You can have your own brand. Okay. So that is what you can do. Then you can have the proper accreditations. You can have the MOUs. जैसे हमारे Wikipedia has the accreditation from the World Yoga Alliance, right?
So that gives you the opportunity, that gives the trainee the opportunity to practice anywhere in the world. ठीक है, तो ऐसे आप ग्रो करो, है ना? ग्रो करते करते आप इतना ऑफिशियल बन जाओ कि आपका मतलब आप जो क्रेडिशन देते हो उससे भी ट्रेनिंग का जो या तो जो भी आपके स्टूडेंट है उसका बेनिफिट होता है. It's a big thing, right? For any training or for any student, right? So ये सब चीजें हैं. Then you can also be on the social media and spread the awareness. ठीक है? You can also write blogs. ठीक है? You can have your own YouTube channel. You can have your LinkedIn page. Okay. So these are the ways that you can professionally grow, right? And create your own market. As the stage increases with you, ठीक है, आप products भी बना सकते हो related to what is all related to mindfulness practice. So all of these are like ऐसा एक के बाद एक steps for you towards success, towards growing. So all of these is important. You start writing blogs, you can have your own website. Okay. You can associate yourself with any trust. You can create your own trust. Yeah? So ये सारी चीजें, you can be a you can have a proprietorship, you can work as a freelancer also. So ये सब करो. Okay. And try to create, okay, the awareness for this community of mindfulness. Because understand, Charles Darwin in the evolutionary psychology, right, stated in 70s that survival of the fittest. But what we are seeing as mindfulness community is the survival of the kindest. We are losing humanity to a great extent. Our work is, okay, to bring that notion, survival of the kindest. वो चीज हमें लानी. That is the aim. So spread this awareness, make it a boom. Already in the past 1 decade, mindfulness is at the boom. ऐसा booming topic है, सब mindfulness के बारे में बात कर रहे हैं. I am in that field of research, so I know कि कितना ज़्यादा लोगों को mindfulness का कीड़ा चढ़ा है to practice it. उसमें उन्होंने क्या spoil किया है mindfulness को कितने हद तक, ठीक है, जो mindfulness नहीं भी है exactly. ठीक है, तो ये भी है, pseudo mindfulness भी अब आ चुका है, right? So we do not want it as authentic as we are, and receiving the creditation from the authentic institution like Advaita. We do not want this to prevail in our presence, and we should not. इसीलिए हमको we should be taking it as a responsibility. हमारी गुरु दक्षिणा सिर्फ इतनी है कि हम कितना mindfulness को authentically, क्या authentic mindfulness है वो हम लोगों तक पहुंचा सके, and survival of the kindest वो मोटो ला सके जीवन में. So this is what it is, correct? So always aim for this, right? सही चीज किसी भी ज्ञान का यही है कि आप कितना बांटते हो और आप कितनों का भला कर सकते हो आपके ज्ञान से, ठीक है ना. वरना आप ज्ञान लेके बैठ गए, ठीक है, कोई बात नहीं, पर उससे अगर किसी का भला नहीं हो रहा है तो फिर वो आपका ज्ञान किस काम. तो यही बस मोटो है जीवन में. तो ज्वाइन after 2 days from now, you will be in that community of mindfulness. So
it is important for you also to join that force and motivate people कि आप authentic mindfulness पढ़े, आप authentic mindfulness को जाने, right? And be kind as much as you can, right? Even if you are not, you know, wanting to learn mindfulness, but आप थोड़ा सा mindfulness apply कर लीजिए everyday life में, it can do wonders. Okay, so this is it. बताओ, कोई question है आपको? Just a personal question, like after doing this 3-month training, like when did you start practicing as a practitioner, matlab, as a healer? As a healer, see, first things, I do not have the level 2 and level 3. I just have level 1. I'm only eligible to teach level 1. I'm still to do my level 2 and my level 3. Okay, So good to know that. That you are so good, like even after one level only. probably it is all, you know, वो मैंने अपने जीवन में ऐसा रखा है कि जब से योगी सर happened to me in my life, it is all about his karam that, you know, he has trained me that well के ये हो पाया. And second is, you know, भगवान की इच्छा है, universe has selected me to do something in this stream, so I am just feeling that way, right, that yes, I have to do it. But अभी frankly speaking मुझे ऐसा होता भी नहीं है. I do not worry कि मेरा level 2 3 कब होगा. You know, whatever, however I am right now, I am happy कि हाँ ठीक है, वो जब unfold होना होगा तब होगा. And that is, I have realized that changes in me, and that is why I can talk at so personal level and I can give a lot of examples कि क्या changes होते हैं, क्योंकि मैंने बहुत नजदीक से एक्सपीरियंस किया है वो चीजें. सो आपका एक सेल्फ, यू नो, आप कैसे उसको देखते हैं और लेते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है. ठीक है. सो when I talked with, I remember talking to sir, and it has not been so much of time me completing my first level. It is just I completed in last November. Okay. Yeah. So in last November, correct. In last November, I completed my level 1, and yes, then it was I was able to do my exam, my journal, and everything, my practicums and everything. So I used to take it as something कि तब मेरे मन में ऐसा नहीं था कि मुझे ये करना है, और क्योंकि ये मेरे रिसर्च के लिए मुझे ट्रेनिंग नहीं थी. The research that I'm doing in my for my doctorate degree, but मैंने उस तरीके से उसको नहीं लिया कि I do not have to do it because I need it. Okay, I am doing it for just experiencing it and see that how actually mindfulness helps people. ठीक है. और उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा when I actually talked with sir and when I actually started. So because universe का तब तक हुक्म नहीं था, वो will नहीं था, तब तक नहीं हुआ. वो जब अनफोल्ड होना था तभी हुआ. तो अब ऐसा है कि जब है अनफोल्ड होना होगा तभी वो अनफोल्ड होगा, क्योंकि ऑलवेज आई हैव फाउंड दिस. जब भी मेरे को फर्स्ट लेवल के भी लिए जाना था, दिस इज आई एम टॉकिंग एट अ वेरी पर्सनल लेवल, आई कैन शेयर इट विद माय डिसाइपल्स, इट्स बिकॉज they should be knowing that you do not become a healer just like that. I have told this to Alka also, that it is not just that कि आप रातों रात उठ के आपने डिसाइड कर लिया मेरे को हीलर बनना है, आपने ढूंढ लिया, इंटरनेट पे सर्व कर लिया, तो चलो अद्वैत योगा स्कूल है दिल्ली में और हम कर लेते हैं. ऐसा नहीं होगा. So for me the biggest challenge was to get that much of money, because I was in that situation. It is not that I cannot afford it. It is not that. Through, like, if I see it through the family wala situation, okay, I did this task, but I did not want to do it like that.
I was having this, I need to earn it, and I Yeah. need to earn that money, and I want to do it. Okay, so ये चीज को अनफोल्ड होते होते हुए भगवान ने इतना ऐसा 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 गोल गोल चक्करों में से घुमाया कि भाई तुम समझ लो कि तुम कहाँ, क्योंकि तभी आपको ऐसा रियलाइजेशन होता है कि यार तुम कुछ कर रहे हो तो वो तुम्हारा खून पसीना है, तो तुमको पता है कि तुमको कैसे करना है, what have you actually you know give for it, and ठीक है हो गया, ठीक है, पर पैसे आने के बाद भी आई वाज लाइक टॉकिंग टू सर के सर ठीक है अभी आई कैन अफोर्ड इट एंड आई हैव द मनी। तो 2 बार तो उसके पहले मेरे को सर ने पूछा कि आर यू विलिंग टू ज्वाइन, व्हेन आर यू ज्वाइनिंग, व्हेन आर यू ज्वाइनिंग, मेरे उनको 2 बार उनको मना करना पड़ा, सर आई एम नॉट एबल टू मैनेज द फाइनेंसेस राइट नाउ। और मैं उनके साथ पहले से इट इज लाइक जो गुरु होता है वो शिष्य को मतलब वो कनेक्शन वो बॉन्ड हो ही जाता है, वो रेपो हो ही जाता है। तो मैंने सर को बहुत ही आराम से बता दिया, आई वॉज वेरी ओपन when I actually talked with him that sir I could not manage the finances। तो हमारा मेरा जिस मंथ चालू होने वाला था उसके बाद वो अक्टूबर में चालू हुआ, और जिस दिन मेरे पास पैसे आए उसके 2 दिन बाद सर ने बोला कि वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 1 यू कैन पे द फीस, और मैंने वो ही दिन बैठे बैठे मैंने फॉर्म भर के मैंने तुरंत ट्रांसफर कर दिया। सो दिस इज हाउ इट अनफोल्डेड, इट डिडंट इवन took like second for me to transfer and to get started on it ना। सो अगर वो होना होगा तो वो तुरंत हो जाए, पर अगर आपको ऐसा है कि इट इज नॉट अ टाइम, क्योंकि मैं पहले से ये चीज में मानती थी कि जो आपके नसीब में है उससे ज्यादा और जो जिस टाइम पे होगा उस वो टाइम से आपको पहले ना ही बाद में मिलेगा, तुम जितना भी हाथ पैर पछाड़ा दो वो नहीं होगा, and this is the reality। And I come from a Brahmin family, so I exactly know what is spirituality, what is spiritual awakening. I have seen it on everyday basis, है ना। So मेरे लिए it was altogether a different experience। तो बस कर्म है, हो गया ये, और अभी जितना हम ट्रू हो सकते हैं, हम जितना कर सकते हैं लोगों के लिए, we can do it। And I remember it that मेरा जब सर्टिफिकेशन था I did travel to Delhi for my certificate because I was in Ahmedabad and it was in Delhi, so I still remember that I traveled to Delhi and for my certificate ceremony in a train, and uske next day I had to attend a conference in Noida। So this was how, and this is life, it will कहाँ आप ऐसा था कि you have not even had a thought of getting trained in mindfulness आपके मन में आया भी नहीं था, and then you are a mindfulness healer like after teaching people, teaching disciples। So this is life। आप जितना present moment में रहेंगे उतना uncertainty से बचेंगे। That is what I have learned through mindfulness, and it is एक कनेक्ट है, वो कनेक्ट आपको मतलब बहुत ही ज्यादा स्किल्ड गुरु होगा और बहुत ही ऐसा पायस सोल का होगा ना, तो आपको तुरंत ही उसके इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। अभी मुझे नहीं पता आपके साथ क्या हुआ है, अलका जी के साथ क्या हुआ है, क्योंकि अभी भी कुछ मनुष्य है जो आपको सिखा रहा है, बट फिर भी जो जिस तरीके से अनफोल्ड होना होगा वो हो जाएगा। बस फेथ रखो इन योरसेल्फ, क्योंकि माइंडफुलनेस के बाद आप एक्चुअली लोगों को देख पाएंगे कि हाउ दे आर, वो एक चीज है, आप उनकी ऑरा पहचान पाओगे, आप उनकी एनर्जी पहचान पाओगे। But I also need to practice it on daily basis for my own. वो तो Then only I would be able to give it. yes। मेरा सेशन होता था शाम को, and I used to practice in the morning, and then I used to go to college, मतलब department, university, so I teach there right at Gujarat University। so वो पूरा टाइम करने के बाद I used to come home and again take the mindfulness classes। तो ऐसा है, so you have to work hard to get anything in life। When I was in student life like you,
even I was this kind of, a hustler. कि ये भी करना है, ये भी करना है. Now things are very still. मतलब for me, things are very still. Otherwise, hustle is still there. The baby के साथ चीजें manage करना ना, time management, that is getting difficult. Sometimes I'm very restless. के even if it happened in our sessions also, when you were asking me to sit and meditate, and I was like in a half sleepy condition. So that happened to me. Still, I don't want to leave it. It's like it karna hai, like I have to fight odds and then have to settle myself in this thing. Right. That is important. Yeah. That is really important. Yes. So I think only 2 sessions are remaining with you. After that, we'll have practice sessions, but 4 sessions are like 2 sessions. Officially only 2 sessions. Then you will be having another guru. So that is why I always say that gurus, so Yeah. multiple gurus in life. Yeah. So आपके अलग गुरु होंगे, नए गुरु होंगे, शायद योगी आनंद सर आपको सिखा रहे हो नेक्स्ट लेवल. So हो सकता है, possible. Okay. So all the best from my end for level 2 and 3. Okay, all the best for the exam. आपका पेपर तो Thank है you so ही. much. Thank you so much. Much needed at this time. That's completely fine. Okay. Sure. Let us remember the Almighty. Let us pray for the well-being of our loved ones, the community, people around us. Let us pray the Almighty that this world becomes a better place to live. Let us pray for the peace of this world, each and every individual over here. Let us pray for our compassionate nature, as well as creating empathy within us towards each and every individual in the future. Om. सर्वे भवन्तु सुखिनः. सर्वे भवन्तु सुखिनः. सर्वे सन्तु निरामया. सर्वे सन्तु निरामया. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु. मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. One Om Three Shantis. Om. Om. Shanti. 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 Bow down to the Almighty, to all your gurus, and be grateful for this another day in life. All right. Okay. Thank you so much. Namaskar. Thank you. Namaskar.